Hey guys, welcome back to our channel. So a lot of you actually commented on last week's video. I was really happy to read all of them. So I would request you guys the same thing. So if last week's analysis was helpful to you, do let me know. And I'm the kind of a guy, I like detailed feedback. So jitna zyada you can tell me about what I think probably you think I'm missing exactly, or what are you liking. I can do more and less of that depending on what the people are liking or anticipating. Okay? So whatever it is, good or bad, do let me know and I'll try to improvise in my next video. Okay? So last week what we discussed that Bank Nifty has broken out. So if it's broken out, I don't expect the last week's low to come. Okay? So now Bank Nifty में usually my logics no they'll, because the way I've backtested वो Thursday तक चलते हैं वैसे वाले logics से मेरे मतलब, and this is in general this move has failed. Okay, breakout day जो है this has failed, but I'll tell you we didn't get stuck. I'll tell you why, because I'll explain you that when I cover Nifty actually that will be easier for me to do. ठीक है? So Bank Nifty का let's look at price action पहले कि what does this mean, उसके basis पे what is the next week's view, and then we'll see कि what can we do about it. ठीक है? So for me what location is this? The location is a all-time high. All-time high breakout के बाद there should be ideally logically there should be no selling. ठीक है? If the move is strong. Now this tells me कि ये move उतनी strong नहीं है because फ्रेश लेवल के ऊपर जहां पे कोई भी सेलर नहीं रहता है 80H पे, बिकॉज एवरी बायर इज विनिंग एट दैट टाइम, वहां पे भी लोग आके बेच के जा रहे हैं और बेरिश एनगल्फिंग भी क्लोज कर रहे हैं. ठीक है? सो दिस फॉर मी इट्स नॉट अ गुड साइन. इवन इफ वी गो अप, you'll be like ये पागल हो गया है ये लड़का, बट स्टिल आई थिंक ये करंट वीक का हाई नेक्स्ट वीक में आने का चांसेस आर वेरी स्लिम. ठीक है? स्पेशली थर्सडे तक मैं इसको यू कैन यूज इन निफ्टी. ठीक है? निफ्टी का भी विल कवर, बट बैंक निफ्टी में आई थिंक 2 weeks आर लेफ्ट नाउ, सो नाउ वी कैन स्टार्ट. फर्स्ट 2 weeks यू शुड अवॉइड बैंक निफ्टी इन माय ओपिनियन, अपार्ट फ्रॉम इफ यू हैव अ वेरी गुड ट्रेड लाइक यू कैन सी. ठीक है? वरना निफ्टी करना चाहिए. सो मुझे कुछ बुलिश यहाँ पे बैंक निफ्टी में लग नहीं रहा है. So if it becomes bullish, okay, because US markets recover or something like that, so then even if we go up in the next week, I expect an inside candle. ठीक है? So no, I don't expect another breakout. इससे भी बड़ा breakout candle आएगा, ये मेरा expectation नहीं है that last week का high भी निकलेगा. ठीक है? And these are all probabilistic. Like I'm not going to get like 100 में से 100 of them correct. ठीक है? थोड़ा बहुत I can plus minus with the accuracy by studying the past, but उसके बाद I also can't do anything. So let's come on the daily chart Bank Nifty का. So let's draw levels. So first thing our support was 56,000 का level. Okay, and I think the next level we should mark is this previous swing high. ठीक है? So now if the market Bank Nifty particularly if it comes down, मेरे हिसाब से 54,000 के आसपास अगर गलती से भी Bank Nifty आता है तो मैं क्या करूंगा मैं वो बता रहा हूँ. आई एम नॉट सजेस्टिंग यू टू डू. आई विल यूज CSPs एज अ वेपन. ओके, अगर वहां पे स्पाइक पे लेट्स से यहाँ पे ऐसा स्पाइक पे आई विल ट्राई टू सेल कोई दूर के ऑप्शंस. इज द फर्स्ट थिंग दैट आई विल डू. सेकंड थिंग, ओके, इफ यू हैव गट्स नो व्हाट यू कैन डू, you can use future as a weapon also. फ्यूचर में you can make a lot of money. For example, ये जो अप्रैल का जो महीना था ये I made more than 1 crore in that month alone. Okay, because I added my futures with my option selling के trade. अप्रैल में and lot of people they lost a lot of money because ये जो gap down होता ना 7th को ट्रम्प का and then the ferocious up move. I actually caught this up move and I didn't get trapped in the down move. Okay, and we had a call sell in the down move. ठीक है? सो मैं कहीं अटका नहीं हूं और मैंने मूव्स कैप्चर किए हैं. सो मेरे हिसाब से यू कैन यूज फ्यूचर्स एज अ वेपन, एंड वो जोन जो है मेरे को लगता है वेपन की तरह यूज करने का इज नियर 53,800 का लेवल. ठीक है? सो 53,800 पे आप डिपेंडिंग अपॉन रिस्क एपेटाइट, अगर रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है तो CSP बेचना, अगर ज्यादा है तो फ्यूचर बेचना नहीं, सॉरी मैं बेचूंगा. एंड अगर मुझे लग रहा है ठीक ठाक अच्छा है तो मैं फ्यूचर लॉन्ग जाऊंगा वहां पे. ठीक है? So now let's actually plan for what may not happen पहले. ठीक है? We'll get that out of the way, then we'll discuss कि क्या होने के chances है. I see this as a breakout candle के नीचे है, but we haven't have a close yet. ठीक है? So very simple, अगर breakout candle के नीचे है, if we get a candle close with a red candle, एंड बिकॉज ये जो बाइंग दिखाई है अभी, मुझे इसके भी नीचे चाहिए कैंडल क्लोज. अगर इसके नीचे एक बेरिश कैंडल क्लोज आता है तो मैं श्योर हूं कि मतलब बेरिश ट्रेड एक्टिवेटेड है. ठीक है? निफ्टी में अभी भी आई विल शो यू इट्स ट्रेडिंग इन अ रेक्टेंगल, सो वेरी गुड ट्रेड मे हैपन इन द नेक्स्ट वीक, बट बैंक निफ्टी वी डोंट नो इट. सो लेट्स वेट 1 day के कैंडल क्लोज, रेड कैंडल बिलो दिस ग्रीन कैंडल्स लो. ठीक है? इफ दैट कम्स, I think that opens the gates for the next support zone to be tested. ये जो है पूरा zone can be tested very easily then in my opinion. And I'll tell you Bank Nifty में मैंने क्या किया था. So this was Friday. So Friday we had थोड़ा सा Nifty, थोड़ा सा Bank Nifty. So Bank Nifty we expected a gap up. So this candle के बाद usually we play for a gap up. And अगर उसमें decay अच्छा खासा होता है तो we get out most of the time. But this time we waited, and when it came to retest sort of thing,
बैंक निफ्टी में द प्रॉब्लम इज आई कांट वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम. अगर थोड़ा भी मेरे अगेंस्ट स्टार्ट्स टू गो, monthly option है ना, so I can't treat them like a weekly one. So in these 2 days only we got out in Bank Nifty with I think 45 और 50 पॉइंट्स प्रॉफिट में निकला मैं मेरे ऑप्शंस में. हायर प्रीमियम्स बेचे थे बिकॉज देयर इज नो नथिंग एल्स यू कैन डू, एंड वी गॉट आउट विद द प्रॉफिट एंड देन वी यूज दैट मार्जिन टू सेल निफ्टी ऑप्शंस. ठीक है. For now, if the market goes up, I am expecting some resistance near this zone of 56,000. Why? Tell me logically. This is a gap filling zone. ठीक है. So ये पूरे zone में resistance easily आ सकता है मेरे हिसाब से. तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा मैं fresh long तो नहीं जाऊंगा मेरे हिसाब से. And in general, I'll tell you in Bank Nifty, you have to respect lower lows formation जो होता है ना. Now see 15-minute chart पे I'm just showing you. It's constantly taking support from this zone. ठीक है. Now it's pausing here. So this red candle, doesn't it at least make you get out of your put sells here or future longs, whatever? Okay, so when you get out and you respect the technicals ऐसे, so this down move you can probably escape that also. So keep that in mind. मतलब ठीक है. So moving forward, see this was a support right for us. So whenever the market comes there 56,500 पे, I'm expecting a resistance now. वो आई डोंट नो कितना देर लास्ट करेगा वो, पर जब भी टचेस योर इट शुड कम थोड़ा सा नीचे. 1 hour इट शुड कम डाउन, 1 day आई डोंट नो व्हाट, बट वहां से नीचे एक बार आना चाहिए. तो दिस इज अ फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन फॉर अस एंड मोर रियलिस्टिकली दिस जोन विच इज 56,000 के आसपास वाला. ठीक है. दिस इज अनदर स्टिफ रेजिस्टेंस फॉर अस. व्हाई? गैप दिया है ना वहां से, तो जब यहाँ पे ऊपर आएगा जो भी ये गैप में लॉन्ग होगा, ठीक है, व्हाट दे विल थिंक लॉजिकली उनमें. अगर आपका थर्सडे 12th जून को इफ यू कैरिड फ्यूचर लॉन्ग, ठीक है, यू माइट हैव सीन अ वेरी बिग लॉस. ठीक है. उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोगों की फट जाती है. तो व्हाट दे थिंक कॉस्ट टू कॉस्ट आएगा ना, आई विल गेट आउट. तो व्हाट दिस कॉस्ट टू कॉस्ट काइंड ऑफ पीपल विल डू व्हेन इट कम्स हियर, थोड़ा सा मार्केट को दे मेक द मार्केट कम डाउन बिकॉज दे टर्न इनटू सेलर्स देन, जो बायर्स थे. ओके. एंड सेलर्स को तो मस्त रेजिस्टेंस जोन दिख रहा है, तो अगेन दे ट्राई टू सेल. तो यहाँ पे these zones में selling pressure आने का probability becomes very high. Okay, so at least if you don't take a selling trade, I think it's logical to at least not buy fresh there. मतलब ये locations पे. ठीक है. Let's look at Nifty अभी. Nifty में what can we see? We are seeing bank Nifty stuck in last 4-week range. ठीक है. Last 4-week range में stuck है. तो I think I reminded you last week कि बैंक Nifty में breakout है, Nifty में नहीं है. Okay. So now what we'll do? We'll वेट फॉर दोनों इंडाइसेस में ब्रेकआउट आना चाहिए. प्रोबेबली विल एंटिसिपेट दिस ATH टू गेट क्रॉस्ड. ठीक है. बिकॉज ये ATH एंडलेसली आई थिंक इट कांट बी बिलो दैट ATH. मतलब कितना भी इट हैज टू गो. यूजुअली निफ्टी एवरी 1 year में ATH टच करता है. यूजुअली अगर टाइम लिया उससे तो 2 साल वगैरह लगता है, पर बहुत रेयर है वो. मतलब 1 year में मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल कम. ओके. तो निफ्टी वीकली व्हाट कैन वी सी? वी आर सीइंग कि मार्केट इज स्टिल स्टक इन अ रेंज. इसमें मतलब there is no proper bullish bearish bias in Nifty. We need a weekly candle closing above 25,100, which is this resistance zone अपना 25,100, and नीचे में we have 24,400. Below this what will happen? Every trader who's gone long or short inside this zone, ये range के ऊपर गया तो every seller will be trapped. If the range के नीचे अगर आया, every buyer will be trapped. Okay, so that's why rectangles tend to work very beautifully because lot of tussle is going on either. Someone has to give up soon. Endlessly market ऐसे तो नहीं चलेगा. तो keep an eye out in Nifty. We can get a very good trade नीचे की तरफ also. We can get a very good trade ऊपर की तरफ also. And I think so if this breakout happens in the weekly Nifty का, this ATH level will very soon come then मेरे हिसाब से. Let's see what happens. Now I'll also tell you थोड़ा breakout बाद what should happen. Let's analyze that. ठीक है. Because I'm drawing a line last 1-2 ये जो resistance लिए थे ना यहाँ से, just marking an arrow उधर. Basically ATH has been hit. ATH नहीं, sorry, swing high has been broken. So what should happen? A move should come that takes Nifty up ऊपर. Move आना चाहिए ऐसे. Move नहीं आ रहा है itself is weird to me. If the move is not coming ATH पे या तो resistance break पे, kind of weird to me. ठीक है. So I'll tell you when easily you could have spotted कि नीचे जाएगा. This is one candle that can tell you that market will come down, but at this point of time what I was thinking, I thought कि it will just test the previous day's close and then it will zoom up. That's what my thinking was. ठीक है. इस टाइम पे but जब ये कैंडल आई then I'm confirmed कि भाई ये तो मतलब नीचे की तरफ ही जाएगा. ठीक है. So after this candle, I think every down move that has come, ये जो gap down भी हुआ है. So but obvious like we had call sells उसमें, we didn't have a single put because this candle is telling us कि it doesn't want to go up because we have a great location. It should ideally come there and take a bounce. So if it's not doing that, it's probably doing something opposite to what you're thinking is going on. So now let's logically tell me now where should the support and resistance be. Now this 1 2 3 touch support वाला जो है, so the first level is 25,050, 25050.
Second level is this previous day's closing price. Actually this is a zone, ठीक है. So 24,850 का resistance है अपने पास and 2550 का resistance है अपने पास. Okay, so if the market comes here, is at least ये जोन में फ्रेश लॉन्ग मत जाना. इफ इट पॉजेज एंड देन गिव्स अ ब्रेकआउट और समथिंग, देन प्रोबेबली आई थिंक इट्स लॉजिकल. मोस्ट लाइकली वहां से नीचे आना चाहिए, पॉज करना चाहिए. एंड इफ इट गोज अप मतलब, so then I will again anticipate some resistance near this level which is 25,050. ठीक है, I think this has been very clear. मुझे बताना, डिटेल्ड बताना आपकी ये मतलब whatever you're liking or not liking about the analysis, so then we'll adjust उसके हिसाब से. Now let's come to the most important thing. ठीक है, 15 minutes पे. The most important thing in my opinion now in Nifty is the daily chart support now, because this is a make or break level. So this is a support because constantly it's going up वहां से. आप किधर भी, this can be a zone probably, but yes, inside this zone market whenever it comes down it goes up, whenever it comes down goes up, whenever it comes down goes up. Now again it's trying to go up. Okay, so logically we are at a support, we have a strong green candle, so market can definitely go up on Monday very easily. It can go. Okay, I'll also show you one more thing. Some of you might remember it. See, the market took resistance from this level, broke out, then it came here to retest this zone. ठीक है, so this gap up was a mega surprise, but my lesson was कि जब भी support के आसपास आता है, you need a strong red candle, मतलब एटलीस्ट बेचना है तो. ऐसे ग्रीन वगैरह में तो बिल्कुल भी कॉल सेल नहीं करना है. तो व्हाट वी डिड, वी डिडंट हैव अ पोजीशन अब, मतलब लेके ही नहीं गए हम आज, क्योंकि मुझे मारने तो है कॉल्स, बट इट दे रहा है ग्रीन कैंडल. सो आई एम लाइक लेट्स वेट वन मोर डे, लेट्स सी देन व्हाट हैपेंस. ठीक है, सो एक दिन रुक के we'll see what happens then. The counter view also I think is very interesting either, because this has been constant support का area ना, 1 2 3 and 4. If you get a daily candle close below this, मेरे हिसाब से straight will attack this zone 24,000 का जो level है ना, you can very easily go there. So I am actually anticipating, अगर मुझे ये 24,450 के नीचे 24,450 के नीचे if we get a 15-minute candle close, I'll be anticipating Nifty that it should probably logically go to 24,000. but ठीक है, but logically always market doesn't work, so we use the उल्टा logic. फिर अगर नीचे जाने को लग रहा है then ऊपर नहीं जाएगा, bet ले सकते हैं फिर. so then all these resistance वाले zones पे I'll probably sell calls. ठीक है, तो कीप इन माइंड 24,450 का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेरे. ठीक है, एंड रेजिस्टेंस का तो वी ऑलरेडी स्पोक. ये एक जोन है एंड दिस इज अ वन जोन. आई हैव ऑलरेडी गिवन द लेवल्स, लिखे थे मैंने. सी मेरा लास्ट वीक का ही सेंसेक्स का ड्राइंग आई थिंक अभी भी एक्टिव है यहाँ पे. सो इट्स स्टिल स्टक इन अ रेंज, वी कांट डू एनीथिंग. वेट फॉर अ ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन. इनसाइड दिस रेंज अ लॉट ऑफ डायरेक्शनल बेट्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं चलते हैं यूजुअली. तो ट्राई टू अवॉइड टेक लोअर रिस्क इन माय ओपिनियन. रेक्टेंगल के अंदर ना हमेशा यू शुड टेक लोअर रिस्क, उसके बाहर यू शुड टेक हाई रिस्क. Let's look at gold. Gold has hit 80h, but it's not a good candle. Okay, we need a strong breakout. तो ये अगर ये 99,000 के नीचे if it comes, you can sit in a sell trade इसमें. मेरे हिसाब से 99,000 के नीचे if it comes only, because then ये bullish move will fade. You trade Bitcoin by the way? I don't trade, but मैं रोज देखता हूँ मेरे ट्रेडिंग व्यू में मोबाइल पे when I check it, no, कितना ऊपर नीचे this does. मतलब तो I think option seller can potentially earn so much money मतलब इसमें, especially directional वाले. मुझे लगता है कि whoever watches this channel, I think they have some liking towards the direction, and directional traders मेरे हिसाब से crypto में they should perform really well. Bitcoin also stuck in a range. Okay, wait patiently for a breakout or breakdown यहाँ पे. ठीक है, go sideways. If you're selling options, probably I'll try to sell outside this range if I was selling. Okay, and then a directional bet के लिए I'll wait Bitcoin में. For the video from the chart analysis perspective, now I'll take some questions because some really good comments were there last week. Okay, so first one, can you please post a video on a daily basis? It's too much work, so we can't do that. Okay, and many times, you know, जैसे कि I'll tell you one more thing. निफ्टी में जैसे ब्रेकआउट हो गया है, तो मैं ये रोज का मतलब आई एम जस्ट वेटिंग. लेट्स से इन दिस जोन, नो, आई एम वेटिंग लाइक व्हाट टू डू. लाइक माय व्यू एंड एनालिसिस वोंट चेंज, बट जस्ट द थिंग कि मुझे डालना ही है यूट्यूब पे 10 मिनट का वीडियो, उसकी वजह से मेरा देन आई थिंक दैट टाइम विल बी वेस्ट. मतलब so then this weekly thing is very easy. I can split it with Nikki. Okay, one by one we can do that, and it's very easy to do. Okay, at this comment I wanted to read because this person, he watches our videos since a long time. I have seen his comments a lot. So he says that the videos aren't as detailed as they used to be, but still they provide some insight. Okay, maybe occupied with something more rewarding. You just work on trading, nothing else. Okay, so this, I want to ask this person that
आई वॉन्ट यू टू टेल मी डिटेल्ड पहले क्या था और अभी क्या नहीं है. ओके, if you can take the time 2 minutes to write what you mean by this, because if I'm actually forgetting something I would love to add. ऐसे नहीं है कि मैं जानबूझ के जो मैं पहले कवर करता था that I don't cover now, ऐसे नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं है. मुझे अभी whatever I think is critical, everything I talk about, ऐसा एक पॉइंट नहीं है मेरे हिसाब से which I myself look at and I have not told you. This is actually another great point that I should just write down whatever I want to cover, that way I never forget it. That's correct, I will do that. Which index are we trading, Bank Nifty or Nifty? So we trade Nifty. Okay, लास्ट 2 वीक्स में अगर लगा तो बैंक निफ्टी भी कर सकते हैं, पर्टिकुलरली लास्ट वीक में कर सकते हैं वेरी इजीली. एंड बैंक निफ्टी मैंने बहुत टाइम के बाद मैंने शायद पहली बार किया होगा. मंथली वाले ऑप्शंस वो सीएसपी वगैरह आई हैव डन पहले, बट ऐसे मोस्ट ऑफ द 99.9% ऑफ द टाइम वी टेक वीकली के ट्रेड. तो पहली बार वो ब्रेकआउट पे मैंने मंथ के ऑप्शंस बेचे थे एंड आई टोल्ड यू वी गॉट आउट 40-50 पॉइंट्स में उसमें. सो नो लॉस देयर. इफ यू कुड शेयर योर ट्रेड्स, कांट डू दैट. ओके, इट्स इलीगल. वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस्ट अवेलेबल ऑन यूट्यूब. Thank you. Which other channels do you watch? Like, I'm just curious, all of you. क्योंकि मुझे ऐसे कोई मतलब जो मुझे चाहिए रहता है ना वो कोई और मतलब कवर नहीं करता है वो दूसरे चैनल में. View on silver next week पक्का. Okay, so this person made my day because सबसे ज्यादा खुश I was after reading this comment. Yes, I started going to the gym. Yes, I started taking my health seriously. थोड़ा सा I'm focusing on diet. That's why probably you're thinking. Hopefully, मतलब I improved that because even when we go to workshops, no, some very nice and kind people, some of them they come up to me. They are like, Aditya, you have to improve your health. Okay, this money and all it's okay. Like no one's like cares उसमें that you're making money. But you have to improve your health. I actually agree with them. मुझे सिर्फ I think मेरा weakness है ये, so then I'm trying to improve on it. And पहले I never took it seriously because I was very stubborn. अगर मैंने पैसे नहीं बनाए तो मैं कुछ और करूंगा ही नहीं. I was like that kind of a guy. Now that I know कि how to make money, like I don't पहले जितना work I used to put, I don't need to. जैसे suppose अभी मैं strong bearish Marubozu I'm checking. Now I know more or less like what will happen after that. So I don't need to go and work उतना. Would make a small batch and train them like you were trained by your trainer Patik Patel. This his entire mentorship was too good. Super value for money because like a lot of the weekly logics and all, I tell you, I learned a lot from him. I just add thoda twist to उसपे because after him I met Nikki and Nikki is a much more aggressive trader than him. As of now, no, because he's become more aggressive. But overall, I think Nikki is more aggressive than him. That's why I've shifted towards Nikki style क्योंकि उसमें returns बहुत ज़्यादा बनते थे मेरे versus this method. But yes, probably his one was the best workshop I've ever attended. Okay, so Super Akshit. So this guy says great stuff as always. How are you operating on monthly expiries instead of weekly? Don't do monthly most of the time. 99% of the time don't do monthly. So you've pivoted from taking 2% risk instead of the earlier 1%. It's too much. I think both of them are too much all the time. कोई रीजन है तो ही लेना चाहिए. Shorting OTMs below swing lows upon clear entry. Okay, I'll tell you one very interesting exercise. ठीक है? I'll tell you because you remember me and Nikki used to make educational videos like for you guys. So you know I hate that I will come up with the concept. What I don't want to happen is someone just says कि your concept what you brought is absolutely wrong. So what I do before I open my mouth, I try मेरा level best that I know exactly what happens. So what answer I'm giving you, it's a curated logic, then that logic should work. Okay, I try to do that. So monthly में I thought I'll give you guys a lovely setup month में. So I'll tell you what happens monthly में. See, option selling में मेरे हिसाब से what happens, वो weekly time frame जो cut off रहता है ना, जैसे suppose I'll tell you this is a bearish Marubozu. Daily chart पे this is a bearish Marubozu. Okay, so next day let's say नीचे खुल के पूरा ऊपर जाता है ये. You know why we win in this? It's not that we think कि नीचे जाएगा. It's just we think कि ऊपर इतना ऊपर नहीं जाएगा बस. That's the only reason we win. Actually, we can't predict price. We can to some extent just say कि the probability of the market going उतना ऊपर या उतना नीचे is very low. That's why we make money. तो उसमें क्या होता है? This zone is very difficult for me to wait in एक month में. I'll give you an example. So what happens? Let's say take this red candle. वो spike first week में ही अगर ऊपर आया ना वो तो I can't hold that option. Weekly में no, at least थोड़ा तो gamble ले सकते हैं पर इसमें तो ले ही नहीं सकते. I was thinking, मैं सोच रहा था कि 200 रुपए के options में I'll try to make some setup because if you divide this by 4, you make 50 points a week, which gives you your 1%. These 200 वाले options were very easily going to 600, 800, 1000. They were going like multiple times. So I'm like, ये system तो हो ही नहीं सकता. मतलब monthly option को देख के trade करना system correct नहीं होगा. मतलब you can use it कि market ऊपर जाने का probability है वैसा. For example,
दिस इज अ जोन, इसके ऊपर है, तो यू कैन से कि अप मूव विल कम नाउ. नाउ दिस वन फेल्ड, बट देन व्हेन अगेन इट क्लोज, देन यू कैन से लॉन्ग टर्म अप मूव आ गया है, उसके लिए, उसी के लिए मार्केट ये यूजफुल है, वरना इट्स नॉट यूजफुल इन माय ओपिनियन. तो I think and I'm wrong lot of times, but I think this could be wrong that you're trading monthly expiries instead of weekly. I know weekly is very difficult. I know gamma effect है. I know injections है. Still, I would say weekly better है monthly से. मेरे को तो logic लगता नहीं. I mean, if you think monthly is better, try convincing me. I would love to be convinced, okay, of that logic. Yes, and then most of the other comments were just people appreciating us. So thank you so much for that. Now then, after reading that, it feels कि yes, we are doing something useful. मतलब waste नहीं कर रहे time थोड़ा तो. Even if little bit it helps, it's okay because मेरे कुछ 20-30 minutes ही जाने वाले हैं इसमें. So that's it for this video. If this video was helpful, please hit the like button. Give me detailed answers, okay, because when I come back next week, I'm probably not going to record. Nikki will record, but whenever I do come back and make my videos, whatever points you guys give me, uske basis pe I'll answer, okay, the next time. So thanks a lot and see you later. Bye bye.